center, much stronger than the center we had created under the government of India. चारों तरफ ये हिंदू मुसलमान है तो सिख ईसाई है, ये स्थिति पैदा हो गई है कि पूरा देश तबाह हो गया है। जैसे आरएसएस आप पर आक्रमण करता है और वो पूरा अपनी एनर्जी डालता है, तो उस एनर्जी को आप कैसे उनके हाथ से लेकर अपनी बना सकते हैं? I like a strong united center, much stronger than the center we had created under the Government of India Act of 1925. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. I'm a person who stands for secularism, constitutional rights and democracy, and I'm also a proud sister of my sister Gauri Lankesh, who, as you know, was assassinated about 5 years back. चारों तरफ ये हिंदू मुसलमान है तो सिख ईसाई है, ये स्थिति पैदा हो गई है कि पूरा देश तबाह हो गया है। Because when we leave the house at the age of 50 and we come into our community and we suffer a lot, and forcefully we have been pulled into the poverty. So when they give us the platform to work, even we will be working. कोरोना में मेरे पूरा परिवार चला गया सर। मैं एमपीएससी करने वाला स्टूडेंट था, अभी मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। मेरे सामने पूरा मेरा जीवन पड़ा है। ऐसे लीडर्स को ईडी के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सताया जा रहा है, अलग अलग चार्जेस लगाए जा रहे हैं जो तथ्यहीन है। How much is she getting paid? How much work does she do? ഇൻസെന്റീവ് ഇല്ല, ഒരുപാട് ജോലി കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. രാവും പകലും എല്ലാ വീട്ടിലും പോകണം. ഇപ്പൊ ഇൻസെന്റീവ്, വാക്സിനേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. Why does she do it for 6,000? No other option, no other job. The foundation of a building begins to collapse. It is first the lowest strata that collapses. In order to induce every party, every section in this country, it would be the act of greatest statesmanship. Take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. If we walk long enough, must necessarily lead us to unity. उसकी शक्ति को आप अपनी कैसे बना सकते हो? जैसे आरएसएस आप पर आक्रमण करता है और वो पूरा अपनी एनर्जी डालता है, तो उस एनर्जी को आप कैसे उनके हाथ से लेकर अपनी बना सकते हो? तो ये प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने इनको कहा था, तो अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। हाँ या कम बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ। नाउ आप रोकने की कोशिश करो, ठीक है? Can't be done. Now I'm going to tell him how to position himself to take the other person's energy from them. Okay? So open your legs out and now sit down. Okay? Now what I want you to do is, I want you to, instead of keeping it like this, I want you to bend it like this. Yeah. Now lift your head. Yeah. You come. Now what I want you to do is, I want you to put your hand on your shoulder. Now what you have to do, remember, you have to push the hands up. That's the most important thing. Okay. Now you start pressing and you look up and you push up. Look up and with this, push up with both these, okay? लगाओ, आप 3 लग जाओ. Okay, go. What is going on? Oh my God, so much of energy and push. How did that feel? For a strange reason, I could not feel the power at all. Exactly, because you took it all. Yes, that's what I do to the BJP. Wow.